अस्सलाम वालेकुम। सखर आईबी टेस्टिंग सर्विस ने BPS 5 से BPS 15 तक की जॉब्स के लिए सैम्पल पेपर तैयार कर दिया है जो कि उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आज हम उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। टेस्ट में पहला पार्ट है इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1 है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का, जिसके 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 2। पैसेज है classrooms play an important role in making or destroying nations. These are the places where students and teachers interact with one another. Teachers shoulder have great responsibility in making nations. They impart knowledge to students and later share the same with one another. In this way, knowledge is spread, delivered, passed and transferred in classrooms. Discussions, participations and question answer sessions. The classrooms go a long way for educational and academic development of students, who are the future leaders and nation builders of their country. In case teachers do not play their part in earnest and in the right directions in the classrooms, things might go bad to worse, and nations serve heavy setbacks in different walks of life. Number 1 passage you have read is mainly about A. Role of teachers, B. Role of classrooms, C. Role of students. So this passage is mainly about classrooms. Option B is correct. Number 2, who or which of the following play an important role? A. Teachers, B. Students, C. Classrooms. In this passage, it is clearly mentioned that classrooms play an important role. So option C is correct. Number 3, last sentence of paragraph suggests that A. Hope, B. Fear, C. Warning, D. Apprehension. In last paragraph, it is mentioned that teachers will not play their part in earnest, so the students will suffer. Here the last paragraph suggests warning. So option C is correct. Question number 2. Meanings of synonyms and antonyms are based on their contextual meanings. Synonyms, words having similar meaning. Number 1, as you sow, so shall you reap. Synonym of reap is dash. A. Cut, B. Gather, C. Get, D. Harvest. Synonym of reap is cut. Option A is correct. Antonyms, words having different meanings. Number 1, you made me hopeful. A. Hopeless, B. Unhelpful, C. Fearful, D. Fearless. Antonym of hopeful is hopeless. Option A is correct. Question 3 is spell checking. There are 4 spellings of a word. You have to check whether which one is correct. Number 1, striking. Option A, STRIKKEN. Option B, STRIKEN. Option C, STRICKEN. Option D, STRUCKEN. After checking all the spellings, we have come to a conclusion. Spelling of striking given in option C is correct. Badu cellular. Option A, CELLULAR. Option B, CELLLULAR. Option C, CELLOLAR. Option D, CALLULAR. Here, spelling of cellular given in option B is correct. Question number 4, error detection, finding out the mistakes. पहला sentence है the reason because
he fails in the test is his irresponsibility. A. The reason because. B. Fails. C. The test is his. D. Irresponsibility. But the conjunction present because is error. The correct sentence should be the reason that he fails is his irresponsibility. So option A is correct. Second sentence is an interviewer asked me what was my favorite subject. A. In. B. Asked. C. What. D. Was. Here what is an error. The correct sentence should be an interviewer asked me which was my favorite subject. So option C is correct. Question number 4. Use of prepositions. Number 1. The sky is dash us. A. Above. B. Over. C. Upon. D. On. As I have already told you, preposition above is used when the thing is in rest, and the preposition over is used when thing is in motion. Sky is in rest, so we will use the preposition above here. Option A is correct. Number 2. Cloth is sold dash meter. A. 8. B. By. C. For. D. In. Cloth is sold in meter. Option D is correct. Because preposition in is used when we are measuring something. Question number 5. Sentence structure. Number 1. The sun rose dash. A. Above the surface of the earth. B. Above the horizon. C. On the earth. D. In the sky. Sun is above the surface of the earth and also in the sky. According to me, the most appropriate one should be option D is correct. Number 2. She is dash. A. My kin and kith. B. Next of my kin. C. A friend of me. D. Mine friend. According to me, the most appropriate should be she is my kin and kith. Option A is correct. पार्ट 2 है मैथमेटिक्स, ये 10 मार्क्स का है. नंबर 1. द प्रॉफिट्स इन द बिजनेसेस आर टू बी शेयर्ड बाय 3 पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3, 2 and 5. Profit of the year was 176,500. Determine the number of dollars each partner will receive. हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट और हर पार्टनर का रेशो दिया गया है. हमें इस रेशो की मदद से हर पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड करना है. इसलिए हम टोटल प्रॉफिट को हर पार्टनर के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम टोटल प्रॉफिट को हर पार्टनर के रेशो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए आएगा. नंबर 2. इन अ गेम ऑफ आइस हॉकी the hockey player worked 0.8 seconds to travel 89 feet to the goal line. Determine the average speed of the player in the feet per second. यहाँ पर हमें हॉकी प्लेयर ने कितने टाइम में गोल लाइन क्रॉस की है वो टाइम दिया गया है और वो कितने फीट तक भागा है वो फीट दिए गए हैं. में बताना है कि 0.8 सेकंड में जब प्लेयर ने 89 फीट गोल लाइन क्रॉस की है तो कितने टाइम में वो एक गोल लाइन क्रॉस करेगा. सिंपल है, हमें जो टाइम फाइंड करना है उसे हम x सपोज करते हैं. इक्वेशन बनाते हैं. 0.8 इज इक्वल्स टू 89, x इज इक्वल्स टू 1. जब 0.8 इज इक्वल्स टू 89 है तो 0.8 मल्टीप्लाई हो रहा है. हमें x इज इक्वल्स टू 1 ये x फाइंड करना है. इसीलिए हम 89 को 0.8 से डिवाइड कर लेंगे. जब हम ये डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 111.25. ऑप्शन बी इज करेक्ट. पार्ट 3 जनरल नॉलेज में पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज का है जिसके 15 मार्क्स हैं. नंबर 1. करंटली लार्जेस्ट शेयर in Pakistan's electricity generation comes from A. Thermal, B. Hydel, C. Coal, D. Nuclear.
Currently, largest share in Pakistan's electricity generation comes from thermal. So option A is correct. जनरल नॉलेज के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है जनरल साइंस। इसके 10 मार्क्स हैं। नंबर 1, प्लाज्मा इज यूज्ड इन डिश। ए फ्लोरेसेंट बल्ब, बी न्यून साइंस, सी लेजर्स, D. All of these. Plasma is used in fluorescent bulbs, neon lights, as well as lasers. So here option D is correct. Number 2, radioactivity was discovered by A. Lord Kelvin, B. J.J. Thomson, C. Ernest Rutherford, D. Henry Becquerel. Radioactivity was discovered by Henry Becquerel. So here option D is correct. जनरल नॉलेज में क्वेश्चन 3 है इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़, जिसके 5 मार्क्स हैं। नंबर 1, इंडिया वाज डिवाइडेड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द ईयर 1947 इन हाउ मैनी सॉवरेन स्टेट्स? ए 1 स्टेट, बी 2 स्टेट्स, सी 3 स्टेट्स, डी 4 स्टेट्स। During the year 1947, India was divided into sovereign states. So here option B is correct. Number 2, name the companion of Prophet who had narrated maximum number of hadith. A. Jabir bin Abdullah, B. Hazrat Abu Bakr, C. Hazrat Umar, D. Abu Huraira. Abu Huraira was companion of Prophet who have narrated maximum number of hadith. So here option D is correct. जनरल नॉलेज के पोर्शन में क्वेश्चन 4 है कंप्यूटर, इसके 5 मार्क्स हैं। नंबर 1, सेल A1 हैज़ वैल्यू ऑफ 10 एंड सेल B1 हैज़ वैल्यू ऑफ 11. What is the formula in cell C1 to subtract value of A1 from value of A2? A is equals to sub bracket open A1 comma A2 bracket off. B is equals to A1 minus A2. C is equals to A1 sub A2. D is equals to C1 minus A1. Cell A1 has value of 10 and B1 value of 11. Formula for subtraction is equals to A1 minus A2. So option B is correct.